हेलो एंड वेलकम टू चेसिंग द टारगेट। और मुंबई से आया मेरा दोस्त, और दोस्त को बेशक सलाम करो क्योंकि मुंबई इंडियंस आ गई है फाइनल ऑफ द WPL after losing their spot in the final to Delhi Capitals. And yeah, what a performance. I mean, there were a few hiccups in the beginning for Mumbai. Nat Sciver का ड्रॉप कैच के बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद हरमनप्रीत कौर का DRS के बारे में बात करेंगे। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल हुई कंसिडरिंग कि मुंबई में हुई थी, but nonetheless, they bowled amazing. Izzy Wong, kya zabardast hat trick! First hat trick ever for the Mumbai Indians, irrespective of the gender. Men team में भी शायद कभी कोई मुंबई इंडियन नहीं लिया, मैं आज तक देखा तो नहीं, and I think सुना भी नहीं, तो I think yeah, very commendable effort from Izzy Wong. Harmanpreet Kaur leading her side to the finals, and that's where they're going to meet Delhi, who've had a good enough break. And I'm pretty sure ना टीवी देख रहे होंगे दबा के, because अब ये मुंबई टीम और solid दिख रही। And I have with me the legend of this game, Mustafa. How are you doing? How's your voice? How's your health? And what are your thoughts? I'm doing well, man. Thank you so much. I enjoyed that game. It was, yes, you like you said, Mumbai were given chances, but they capitalized. Nat Sciver, the way she batted, getting to the pitch of the ball, using her feet down the track, but also using her feet to go back and make room and use the cut shot and pull shot to good effect. So it was a good pitch to bat on, but she made the most of it. That drop catch, I think, it was Eccleston who dropped her. Yeah. Eccleston didn't have a good day, and she made the most of it. Nat Sciver, a brilliant performance from Mumbai. And Issy Wong, man, क्या बोरिंग करी भाई आज तो आई नो वन एक बॉल तो फुल टॉस था, तुम्हारे को अच्छा नहीं दिखा बॉल, वो दूसरे दो जो बॉल थे हैट ट्रिक वाले second and third, oh that was incredible, man. And she's really shone in this IPL. For England, she does play but not every single game, but I think with Catherine Brunt retiring soon, I think Issy Wong will be the head of the bowling attack for England in the coming years, and she's proven that today. The control which she bowled with, good pace as well, getting the ball to seam as well. So both Zabardast performance from the Mumbai Indians. They are in the finals now. They're going to face the Delhi Capitals, and this was the performance that everyone was expecting from Mumbai. I was supporting UP in this game, but yeah, Mumbai didn't give them a sniff, man. Just one thing I would like to advise you, just support Mumbai in the finals as well so that Delhi win. I'm just joking. But like for me, yeah, Mumbai Indians was supposedly going to be in the finals. कैसा भी रहने वाले थे, और वो टीम कैसी है, बेहतर प्लेयर है उसमें, टॉप 5। But UP have beaten them in the past, so we always expected कि भाई कुछ तो भी interesting रहेगा, and रहा था, because शुरू का match, if you're looking at the start of the game, it was phenomenal. Like they got 3 wickets, quick wickets. DRS का थोड़ा dodgy था. Elisa Haley was really pissed after the match. Also, Elisa Haley came out saying कि अगर मैं कुछ भी बोली तो मेरे को फाइन लग जाएगा, इससे अच्छा मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ, and I'll just accept what I got. UP a very exciting team for the next edition of the WPL. They look much more stronger. Let's see what they do in the next auction. But the list, the players that they had, we didn't expect. Like I didn't expect. I know you were backing them from the beginning. Losing out your captain, sorry, not losing out Gujarat, but मेरे हिसाब से ये टीम बहुत commendable effort डाली. They came to the playoffs, and they gave Mumbai a tough fight, but Mumbai being Mumbai, they managed to uh, smash it. Yeah, in Mumbai, you see, first everyone is contributing from foreign players to Indian players. If you we can't count out Pooja Vesekar, her contribution 11 of 4 balls. Yasika Bhatia 21 of 18. So Hmm. Harmanpreet scored 14 of 15, I think. So everybody is scoring runs. Everyone is contributing, and then the star players are lifting off, like Nat Sciver and Amelia Kerr. That was a great partnership, and Amelia Kerr has had a very good tournament as well. So it's the star players performing, but the Indian players chipping in as well. So it's been a good team performance. Izzy Wong, I think, went under the radar for everyone looking at the WPL. I don't think anyone had her as like the leading wicket taker or someone who's going to be man of the match in the semifinals. But she's proved all of us wrong. So people are chipping in. Then of course they're reliant on their big players and they're also performing. So overall, उनका performance इसलिए इतना consistent रहा because someone or the other is chipping in and their big players are really performing when it matters, and they're taking the game away from the opposition. Nat Sciver also खाली batting नहीं आके wicket भी important wicket partnership तोड़ी उन्हें, and she contributed with the ball as well. So yeah, unbelievable performance. Haley Matthews has not didn't perform at the level that we expect her to, but she's also had a great WPL. So overall, this Mumbai team is very solid and तगड़ा final होने वाला है भाई. Yeah, फाइनल तगड़ा होने वाला है. एंड लाइक नैट स्कीवर की बात करेंगे एक सेकंड को, फिर लास्ट 2 मैचेस शी हैज बीन सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ फॉर्म, आई मीन कंसीडरिंग हर लेवल. एंड एट द राइट टाइम इज व्हेन यू रिक्वायर, इसलिए एक्सपीरियंस बोलते, एक्सपीरियंस होना का एक्सपीरियंस नोज हाउ टू सोक इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन, गिवन
Yeah. चलो अब fact के भाई she got out. Any other newbie would have थोड़ा बहुत hiccups होते थे, maybe got out even after the chance. But 72 of 38, man, that is something else. Like आप उसके Incredible. बाद आप out होते होते बचे बाद भी आप ऐसा like gutsy move करे, कि आप धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिए, 9 चौबे मारे. And yeah, her foot movement is something that I was really impressed Yeah. by. She knew किधर आगे बढ़ के मारना, किधर पीछे रुक के मारना, किधर कट मारना, क्या करना. And yeah, like I think experience really matters. And considering that she got out on 5 in the last match and was not up to her game, this was the perfect time for thing. But yeah, what are your thoughts on Harmanpreet's DRS call? Do you think that was out, or like how do you look at it? मेरे को तो आउट लगा था जब भी इवन आई टोल्ड यू व्हेन वी वर वाचिंग आई सेड भाई आउट कहीं को नहीं दिया बोल के यू आल्सो डिडंट हैव एन आंसर सो आई थिंक वी बोथ थॉट Because इट वाज आउट she picked it up midair में उन्हें उठा ली थी यार. I don't know वो director. या एक तो जो empire था इतने सोया हुआ दिख रहा था उन्हें, the way he was talking. Director, मतलब भाई जरा energy लाओ यार. वो क्या है? There was no energy in that empire. इफ्तार का टाइम था तो maybe he was also a bit lax but yeah I agree with you man I think that was out मेरे को समझ में नहीं आया क्यों नहीं out दिया and yeah rightly so I know Alisa Healy already she's she has that in her like that fiery kind of character and उन्हें तो खुला बोल देती हूँ indirectly बोल दी कि भाई if I say anything I'm going to get fined and if she Exactly. also Yeah. didn't accept that decision. But again, you have to take your catches as well. The other Nat Sciver catch was more important if you look at it. Harmanpreet फिर भी उतना contributing करी. Yes, Hmm. if you want to talk from the umpiring decision, I thought they got it wrong. But what they had in their control, they didn't make most of that. Nat Sciver का catch ले 100%. लेना था, and that would have been एंड a huge मैं blow for Mumbai. एक ही चीज बोलता हूँ भाई. हरमनप्रीत का कैच था वो जो डीआरएस नहीं दिया. अगर आप 14 रन में निकाले तो क्या फर्क पड़ा भाई. आप 72 रन से हार गए. यू वुड हैव लॉस्ट प्रॉब्ली बाय 58 रन्स. तो इतना बड़ा इट वोंट हैव बीन. हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर आप नैट स्कीवियर का पकड़ लेते थे 72 रन हम निकाल दो. नाउ इट्स हाँ. 112. द इक्वेशन मेक्स सेंस. Yeah, सो but I इट्स know, I ऑलवेज गोन understand where they're coming from because catch रहता like if it was Nat Sciver's पकड़. catch पकड़ना तो पकड़ना oh फिर yeah कैच. या बट so या I हाँ. I like but yes like जो उनके control में था वो नहीं करे उन लोग and they got punished for that so unfortunately for UP again like Alisa Ely said in the press conference in the post match कि भाई we didn't really peak in the tournament, but we had some good matches, Moments. good performances, and we snuck into the semifinals. But yeah, this performance, I don't think she would be also upset with it. But you're up against a very good team, a strong quality side, Mumbai Indians. And credit to Mumbai, man, because they came back. They actually had a poor finish to the tournament, the group stages. Yes, they won the Hmm. last game, but before that, a couple of losses and एकदम से उनका पूरा position league table में change हो गया. So to come back from that and put up a performance like this, it's commendable. And अब देखो final में तो I think they'll be favorites. Delhi is a very good team as well, but Mumbai will be favorites. They're going to play I in mean, their they will home be ground. favorite because they're playing Yeah, at home. But मेरे and they हिसाब have a से solid team, bro. They have a solid मेरे team. हिसाब It's से also like तालिया मिग्रा एंड उसका क्या बोलते ग्रेस हैरिस. मैन आई वाज रियली अपसेट द वे ग्रेस हैरिस गॉट आउट यार. उन्हें पूरा इतना सॉलिड बेस बना लेके उसके बाद खाली कायर दे दी एकदम हवा में दे दी. बहुत इजीली आउट हो गई, चीपली आउट हो गई. एंड आई विश लाइक शी वुड हैव हैड सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट इन दिस काइंड ऑफ गेम इज व्हाट यू एक्सपेक्ट. बट वो हुआ नहीं. बट किरण नवगिरे मैन क्या फोड़ जबरदस्त. रहे थे. एंड आई मुस्तफा भाई बहुत ज्यादा पुकार रहे थे. मतलब आपकी गला खराब है भाई लगा देख के. ही वाज अपसेट व्हेनेवर Simran Sheikh was not giving her the strike. Mustafa Bhai was going Dipti. bonkers. Dipti Sharma. So like, yeah, I think your thoughts on Kiran Navgire, man. I think she I was very smashed it. impressed, man. उन्होंने क्या खेल रही थी and Power hitter है यार उन्हें. the reason was upset was her downfall because like she wasn't getting the strike, man. They just needed to rotate. उन्हें maiden खेल रही थी, consuming dot balls. Just give her the strike. I know it's easy for me to sit here and say that, but you're an international India player. I think you could have rotated the strike over there and it built pressure. उन्होंने कितना मारेंगी. फिर वैसे ही shot मार के फिर out हो गई, right? So if you rotated the strike a bit more, then उससे भी प्रेशर निकलता था. एटलीस्ट स्कोरबोर्ड इज टिकिंग. इंस्टेड ऑफ 0 runs you would have had 6 runs in that Amelia Kerr over. तो यहाँ पे मेरे को like इसलिए frustration हो रहा था that उन्हें इतना अच्छा खेल रहे उसको strike तो दो यार. Or at least even if she doesn't hit at that time, at least scoreboard would be ticking and she could take the game deep. But unfortunately that didn't happen. She got out and फिर लग गई line wickets के. तो इसलिए मैं थोड़ा upset था. Faiz will take a few comments. Gajuba is in the house. Hello sir. Am I in finals? Well deserved, absolutely. A Wong on song, Yeah. baby. I really enjoyed the vibe in the stadium tonight.
do you feel WPL has potential for future? I definitely feel there's a future in WPL. लेकिन मेरे हिसाब से I think they need to play home and away. You should have different franchises playing in different stadiums and in their home stadiums, and probably two more teams. I think that would be cool. या 100% WPL का पोटेंशियल तो भाई ऐसा है कि यू कैन सी सो मेनी so many people that were not watching women's cricket are now into women's cricket heavily, including me, right? I was not. मैं तो T20 वर्ल्ड कप से शुरू करा, आई थिंक उससे पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो सीरीज हुआ जो सुपर ओवर गया था, बट अब जिस तरीके से WPL के मैचेस हो रहे, द क्लोज एनकाउंटर्स, द प्लेयर्स, द क्वालिटी ऑफ शॉट्स दैट वी आर सीइंग, मैन, डिस्पाइट लाइक व्हाटएवर नैट स्कीवियर होंगे, बट इंडिया के भी प्लेयर्स जो है अपने हरमनप्रीत कौर, देयर एक्सपीरियंस, आई नो आई वाज वेरी अपसेट बाय स्मृति मंदाना, Richa Ghosh, because you expected them to do stuff, but certain players that really got world award, she came in place of Bet Mooney, तो काफी ड्रामेटिक चीज़ां भी हुए, एंड डेफिनेटली पोटेंशियल तो बहुत है भाई। कितने बच्चे उतर के निखर के आ रहे। हुआ द स्पिनर मतलब प्रशवी, जो 16 ईयर ओल्ड थी, शी गॉट अ विकेट ऑन द फर्स्ट बॉल टुडे। उसका नाम भूल गया यार मैं, एक मिनट अब भी बोल रहा हूँ मैं। Pashavi Chopra. Prashyavi Chopra, yeah, man. She almost had a double in her over where that catch again was checked out. So 100% काफी improvement है, काफी potential है, and you'll go and see Shweta Sherawat, they're all like future bound है पूरे, तो WPL में तो बहुत ज्यादा potential है going forward. विराट भाई स्पैम कर दे हमारे को कमेंट्स में। विराट कोहली वर्सेस राशिद खान देख लो, पता चल जाएगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा। 100% भाई, बाप बाप ही होगा, बट ये राशिद खान का बाप कहीं को। अच्छा, पाकिस्तान का मैच क्या बोल रहे शायद बड़े भाई, वहां यार पे राशिद खान। देखो, आपको मतलब आपका ओपिनियन है, आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम देख लिए एक बार, आप एक दो बार भेज दो, हम तो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड या यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, अगर आपका ये ओपिनियन है तो ठीक है। दीप्ति's batting has been an issue in Indian team as well. And Chirag bhai, I will apologize to you because you pointed this out before the World Cup, and I told you, no man, she can still rotate strikes, she can hit boundaries with experience. But yes, she's young, but she is experienced, and you did mention this as a problem. And yeah, today was also, I saw that clearly today, and I agree with you now to a certain extent. So good call on that. Mm-hmm. Yeah, I mean, she was taking her time. I get it to adjust and stuff, but she at certain times she could have just guided down to third man. खाली लगा के Yeah, भागने का man. था, and like उसके हिसाब से थोड़ा pressure build हो गया, and then that just added pressure on what's her name यार, उसका नाम Kiran, and Kiran just Yeah. couldn't capitalize on that. So yeah, I mean, Kaka Kiran got out. So yeah, that's what या happened. वही प्रेशर पे फिर उसको उसको ही मारना पड़ता है, एंड इट्स नॉट इजी फॉर वन प्लेयर जस्ट टू टेक द टोल लाइक दैट. यू नीड सपोर्ट फ्रॉम देयर, वेदर इट्स सिंगल डबल और रिलीजिंग प्रेशर बाय हिटिंग बाउंड्रीज, एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट. यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, खाली प्रेशर बढ़ा रहे थे डॉट बॉल्स खेल के, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा गलत था. अब मुस्तफा भाई, आपको क्या लग रहा है फाइनल का सीन क्या रहने वाला है? दिल्ली वर्सेस मुंबई, ऑलरेडी वी सी इट्स 1-1, राइट? लाइक मुंबई बीट देम वंस, दिल्ली बीट देम वंस. मैगलानी, शिफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, जमीमा, मर्जियन कैप, कितने बेहतरीन प्लेयर हैं दिल्ली में. हाउ डू यू लुक एट द फाइनल, मैन? It'll be a fire game, man. I'm saying though you should go to the match, bro. I think it's going to be a wild match, and it'll be very entertaining. The only thing I think is that Meg Lanning, Manjivi captain, hai, like she plays in, she's played in a lot of finals. She understands her teams pretty well. Even if you saw the way she's led Delhi has been incredible, and she has a good team. Like you said, Marizan Cap is there, Jamima there, Shifali is there. If Shifali goes crazy, that will give Delhi a lot of Boost, confidence. yeah. Yeah, it'll give them a huge boost. Meg Lanning herself is a great batter. Marison Cap has finished games. I think Jami and Shifali, if they step up, Delhi will have a good chance, but it'll be a tough game. You're playing Mumbai in their home ground, and Mumbai have already learned from their mistakes now, and they're looking for that victory. Everyone's going to be behind them. But if there's anybody who can defeat them, I think it's Meg Lanning, the captain with this Delhi team. Meg, baby. Meg. भाई विराट कोहली का ले लो भाई, विराट राणा भाई, आप 100 शतक बनाएंगे नहीं बनाएंगे, आप 100 बार ये कमेंट डाल देंगे, उतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ. भाई विराट कोहली 100 शतक बना सकता है मेरे ख्याल से. ही हैज स्टिल टाइम इन हिम. ही हैज व्हाट 25-24 लेफ्ट टू डू, एंड या आई थिंक विराट भाई जिस तरीके से, लेकिन बस वही है कि टेस्ट में भी मानना पड़ेगा. खाली वनडे पे अगर निर्भर रहे और T20 पे तो मुश्किल है, टेस्ट में भी उनको बनाना पड़ेगा शायद.
या मेरे हिसाब से बना देगा, बिकॉज आई थिंक एक फॉर्मेट भी छोड़ेगा उन्हें, एंड दैट विल आल्सो इंक्रीज हिज परफॉर्मेंस एंड हिज कंसिस्टेंसी। वो मेरा ख्याल है। मेरे हिसाब से 100 सेंचुरीज हो जाएंगे, मगर बहुत मुश्किल होगा। मैं आसानी से बोल रहा हूँ, इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट इफ ही डज इट, बट इन माय ओपिनियन आई थिंक ही कैन डू इट। Yeah, hat trick made my day. First time in my life, cricket excited me. You should have watched the T20 World Cup. You would have been more excited in this by. And yeah, I mean, the WPL has been good as well. It's given moments of excitement, moments Bro, of that was anguish. exciting. उन्हें जो थर्ड जो बोल्ड करी थी, और माँ the way she Yeah, was that was flying a was a very good. celebration to match. Yeah, it was very exciting. मैं भी बोल सकता हूँ. I think I was also happy to see that someone getting a hat trick first ever, man. In Mumbai franchise, Malinga, Zaheer Khan, Bumrah, Hmm. सब खेले. Nobody's taken a hat trick. So Izzy Wong, man, remember the name. She's It's too. wrote It's herself in the too. folklore of Mumbai. It was too easy. Yeah. Easy, baby. Uh, uh, But yeah, yeah, punter Punter says is a 20. huge Mumbai fan, so he's Yeah, he says. congratulations to him. Yeah, he says 24th century मुश्किल है. अरे it's Vinay versus punter now, I think. Yeah, in the Whoa. finals, Delhi versus Mumbai. Mushkil hai, that's what I'm saying. I agree, mushkil hai. It will be a huge achievement, but I think he can do it. I think that man has the ability, he has the fitness, and अगर उन्हें format छोड़ा तो I think there'll be even more possibility. मुश्किल तो है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ भाई. I think I agree with you कि it's not easy to score 100 hundreds. It's not, but I think just it's Virat Kohli, and like if he just gets more consistent in like three, if even if he's not dropping a format, he just needs centuries in tests as well. But yeah, I mean, He मुश्किल तो didn't, है, bro. He but didn't score a century for 3 years, and he 3 years, still has 75. And now he's getting 75. those hundreds. Now he's getting those hundreds. We saw in Bangladesh, उसका century है. India में, I think he scored a बांग्लादेश में century. नहीं है, बांग्लादेश में बांग्लादेश नहीं है. में मारे थे वनडे सीरीज में. शुभमन नहीं, गिल उसका पार्टनरशिप वो जो तो था. श्रीलंका था. नो, जो लास्ट मैच था. 150 श्रीलंका. नो, जो लास्ट मैच था इंडिया बांग्लादेश का. शुभमन गिल डबल 100 मारा, सो उसमें कोहली का 100 है. शुभमन गिल डबल 100 श्रीलंका को हैदराबाद में मारा. शुभमन गिल नहीं, सॉरी, ईशान किशन डबल 100 मारा सो. ईशान किशन. हाँ, उसमें ये झुका विराट था. कोहली का 100 है. हाँ, राइट राइट हाँ राइट राइट हाँ, राइट विराट राइट. कोहली का 100 है. यस. आई एम 100% श्योर. विराट राणा, प्लीज बैक मी अप बेबी. भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो. ऐसा क्या बोल रहे हैं भाई, कैसा है अच्छे इंसान आप? 2 मिनट देखे मेरे को, आप अच्छे इंसान है. सब अच्छे हैं भाई, सबके अच्छे हैं, बुराइयां हैं. और शुक्रिया आप जुड़ने के लिए. बहुत आप पैशनेट दिख रहे हैं मेरे को, क्रिकेट फैन. अंशुल भाई, माय मैन, पाकिस्तान के साथ क्या हो गया आज? चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ पर्सनल. अफगानिस्तान तो चढ़ गई भाई शारजा में. आई वाज वाचिंग द लास्ट 3-4 overs एंड या दे कुडंट हिट अ बॉल ब्रो. जो फजल हक फारूकी, उन्हें भी स्लोअर कटर्स डाल रहा था. एंड या the pitch also is a bit slow, but Afghanistan on top, man, and that's why I think international cricket is a different ball game. When you do give chances to inexperienced players, it's always going to be difficult. You'll have to back them and see. Yeah, 100%. I think it's just something new that Pakistan tried, and it's I won't call it a failure. चलो बच्चों को exposure दे रहे. आजम खान, साइम अयूब, एहसानुल्लाह, इतने लोग हैं, and it's just going to be up next match में देखना पड़ेगा. But yeah, भाई वही my boy Rashid इंटरनेशनल leading from the क्रिकेट. front, my boy Rashid leading from the front, baby. इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या रहता मालूम, यहाँ पे राशिद खान लाइक Fazal Faruqi, yeah. यहाँ पे उसके साथ बैकअप है. लाइक इंटरनेशनल इज Hmm. योर टॉप प्लेयर्स इन ईच thing. That doesn't mean like Pakistan is a great team as well, but they're not playing the full team. They're playing inexperienced players, and they, to play these guys, it's not an easy task. Nabi bhi hai, इन्हें भी है, उन्हें भी है, तो अच्छी bowling है उनके पास. Punter bola Harmanpreet going buck in the finals. I've seen her Hmm. go buck in the finals before also, but she hadn't crossed the She line. got Now she she went needs she to cross she the went line. she went buck, but आखिरी में थक गई थी उन्हें और रन आउट हो गई थी. एक चीज मैं बोलूंगा फैज, अगर उन्हें हार गई फाइनल, आई डोंट थिंक शी विल वांट टू सी मैक लैनिंग एवर अगेन इन हर लाइफ ब्रो. इतने I think बार I think I, I think I won't want to see her again as well. bro, Meg Lanning has the number against her. Now this is a different side. Meg Lanning doesn't have her Australian teammates, in competition, but she's shown even with this Delhi team she can be competitive. And if Meg Lanning wins this, she's by far the greatest captain. I think for any Oh gender, man, any for format. sure. भाई 7 Yeah. वर्ल्ड कप फाइनल मेरे भाई, 7 वर्ल्ड कप फाइनल, मजाक नहीं है Already उसमें. she's there, man. Already she's there. उन्हें मेरे लिए भाई, I didn't know about that stat when I found out about that stat. भाई मैं तो परेशान हो गया कि कौन ऐसा, क्या अलग ग्रेट होंगे यार वो औरत की, नेक्स्ट लेवल. या ये भाई मेरे को समझ में नहीं आया सवाल भाई आपके. बहन तो स्कीम अच्छा नहीं खेल पाए, उसका सोल्यूशन क्या, किसका भाई बहन अच्छा नहीं खेले? तो जरा रिफ्रेश करिए विराट भाई, हमारे को समझ में नहीं आ रहा, जरा मेरे दिमाग में अलग सवाल आ जा रहे भाई बहन का स्कीम बोले तो आप जरा मेरे को ये क्लियर कर दें. लॉल कहते हैं पंटर वाज लाफिंग आउट लाउड. भाई बहन स्कीम वही बोल अच्छा रहा हूँ. नहीं खेल कॉपी पाए पेस्ट चल रहा है उसका मेरा.
भाई बहन बहन बहस तो नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा विराट भाई, सॉरी। The I'm man Rana them from injury, Haryana. bro. The man them can understand. Fez, That's your it. prediction for the final, we'll do a preview, but your prediction for the Oh, I'm final. going with दिल्ली ब्रो। मेरा तो फर्स्ट शुरू से दिल्ली के ऊपर था भाई। मैगलैनिंग दिल में आ गई भाई, समझ में नहीं नहीं, आ रही तो क्या सेकंड था फायदा। दिल्ली, पहला दिल्ली आरसीबी फर्स्ट, था। दिल्ली फर्स्ट आरसीबी ब्रो। था। आई नेवर सेड तो आरसीबी गोना विन, नहीं भाई। तो- I can take you back. I'll clip myself. I said Delhi for win, bro. Delhi for the win. बर्ट Uh, एंड पेरी, आई थिंक ब्रंट एंड पेरी गुड ऑलराउंडर लगता है आपको, जबरदस्त याद जो नैट स्कीपर ब्रंट है, कैथरीन ब्रंट की बीवी, शी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, शी इज इनक्रेडिबल, टुडे वी सॉ दैट विकेट भी ले और बैटिंग जो करी भाई, फ्रंट फुट पे बैक फुट पे जो टाइमिंग था, जो पावर हिटिंग था, इनक्रेडिबल, शी इज अ ग्रेट प्लेयर मैन, नैट स्कीपर, and she's proven for England as well. The reason why England do reach these semi-finals, finals, she's one of the main reasons behind it. Like she's a great all-rounder, and yeah, one of the best we've seen. Stay tuned for new chip strategy. न्यू चिप ये है कि ये न्यू चिप मेरा ये है कि दिल्ली जीतने वाले हैं भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, चिप स्ट्रैटेजी है मेरी। मैं पहले मैं आरसीबी मैं बोलते हो, फिर पीछे से आके दिल्ली का एक चिप डाल लेना। मैं बहरहाल, बोल रहा हूँ मुंबई जीतने वाली है, बट आई विल बी हैप्पियर इफ आई वांट दिल्ली टू विन actually, मैन। I मुंबई, don't mind. I don't आई डोंट mind. I वांट just want मुंबई to see टू a good game. विन। Why not see a super over, man? I always love super overs, and this व्हाई is the नॉट first सी WPL सुपर, final. या सुपर I just want to see a ओवर good रन। game. I don't mind. मेरे को like दोनों टीम में उतना नहीं है कुछ भी, but I just want to see a good game of cricket, and it'll be a good finish. Hopefully, it'll be a good finish to a good tournament. I think what I want to see improvements in the next season is more stadiums, more grounds. I feel that the women deserve this. Like the quality of cricket that we've seen on these three grounds, two grounds actually, is quality cricket, and abhi the next step is to have home and away matches, make it more competitive. If you can put two more teams over there and keep trying to increase the popularity of women's cricket, abhi to I think it's been a good start, and these are the improvements I want to see. You always have to improve. Afghanistan हरारी आज पाकिस्तान को, बिल्कुल वही तो या लग रहा, 100%। फिर से लैंडिंग को जिता रहे हैं, Meg Lanning. Yeah, if she wins, man, it'll be लैनिंग incredible को for her. जिता नहीं रहे, लैनिंग जीत रही भाई। लैनिंग को कोई जिता नहीं रहा यार। लैनिंग Oh, इज नेक्स्ट है। या नो, गुरबाज भी मार दे रहे हैं यहाँ पे, 23-0 है अफगानिस्तान। भाई कहाँ से हो आप, गैस करो मैं कहाँ से हूँ। फिर से पूछ रहे हैं, 3 बार पूछ लिए विराट, आज 4 बार पूछ लिए। अच्छा फैज, इट्स टाइम आई थिंक टू गो इनटू आईपीएल मोड। जस्ट बिफोर दैट, टुमारो, या टुमारो का थोड़े घंटों में न्यूजीलैंड श्रीलंका का पहला ओडीआई है बाय द वे। अच्छा, एंड या आई मीन वी आर गोना बी आल्सो लुकिंग एट दैट टुमारो। तो जस्ट अगर आपको फैंटेसी पिक्स अप करना है या थोड़ी देर के बाद करना है, सुबह में, आ, हाँ। आ, क्या क्या भाईजान? नहीं नहीं, सुबह में है बोल रहा हूँ मैच, या यूर राइट। सुबह में है मैच, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका 6:30 बड़े कड़क चाय पी लेके बैठो पूरे। बट या okay, we'll move on to the IPL for now. RR की टीम है, RR as in Yeah, Rajasthan। first we'll preview the WPL. We'll review the WPL final as well. But yeah, it's time for the IPL. There's a lot of teams, a lot of things we have to talk about. Also, we will do some shorts and everything that me and Faz will post. We have some topics to discuss, so that'll be fun. To make sure you comment on those videos as well with your reasoning, because I'm sure you're not going to agree with a lot of things that we pick. We're going to rank some stuff for ahead of the IPL, and I'm sure thoda sa Sunrisers bias रहेगा वहाँ पे. Yes, Faz, take the stage, bro. Yeah, so I mean we're going to go with RR। RR as in Rajasthan Royals, don't think anything else। ये है आपकी राजस्थान की टीम Allah 2023 bol, आईपीएल के। जी, Allah हल्ला bol, बोल। baby. Let's हल्ला, go. जी। So Abab Mustafa bhai, like tell me how you're feeling after looking at this squad, because when I went through it, मेरे को तो बहुत solid दिखे यार। This is the team that is in contention this year, and I'm not lying। I would change your mind in 30 seconds. The reason is, you see Prasidh Krishna, Obed Mukai, who were a key factor, they're not going to be Hmm. available. At least for the start, they're Oh. not going to be available. And Prasidh Krishna's 4 overs were key in last year. If you notice, yes, bowled really well, Ashwin Chahal, but even Prasidh Krishna was breaking partnerships. He was using pace, bouncer uske achhe the, and it was difficult to hit him or score runs off him. So him Hmm. not being there is going to be thing. Obed Mukai also left hand, he brings that angle in. उन्हें भी नहीं था, तो I think
That is a big blow to their chances. If they were both fit, it would have been a different scenario. We can double check on this, but from what the sources that I've read and what I've been told is that these two won't be available in the beginning, and ye thoda sa mushkil ho jayega. Who can they replace with? Kuldeep Sen will come into the picture. He's a very talented guy. He's debuted for India also. What's his name? इन्हें भी KM Asif, we've seen him in CSK. Yeah. और आपका भाई सैनी भी है. So you have options, but that You have quality. Jason Holder as well on the Yeah, you all-rounder have Jason Holder, department. and I think Jason Holder can be effective in Rajasthan grounds, but then you'll have to thoda sa tinker with your other players. Like Adam Sampa might not get a game, and that's going to be Mm. heart wrenching, bro. That guy Huge. is the best spinner in the world, and he might not play. Mm. So that's going to be an issue. Can you fit all three? I don't think you can. If you're going to play Holder, you have to play Bolt also. You'll have to play Joss Butler. Then you might play a Root or a Hetmeyer there in the middle order. So I don't know if he's going to get a chance, Zampa, because do you have Yeah. Indian batting now? If you see the spinners, they're top class. Even if Zampa doesn't play, Chahal and Ashwin, I think these are two proper Indian spinners who have experience, who understand conditions. And if I'm not Mm. mistaken, they're going to play in some the Rajasthan in Jaipur ground and over Guwahati. there. No, Guwahati and Rajasthan, right? In Jaipur Yeah. also. So Yeah. Yeah. Jaipur, if I'm not mistaken, just square boundaries are thode bade hai. And Ashwin Mm. and Chahal, I think, will really use that to good effect. I think Obed Mukai will also, not Obed Mukai, Trent Bolt will also get some seam and movement. So will Jason Holder. So those conditions might help Rajasthan. But yeah, these two blows will be an issue. If we look at the batting phase, top order, heavy, excellent top order. Josh Butler to उन्हें single-handedly 6, 7, 8 game जिता दिया था last year. He took them into the playoffs, into the finals Yep. also, you can say. Sanju Mm. Samson has not still shown that consistency that we know of Sanju Samson. अगर उसके आप fan following देखे और consistency देखे, फर्क है अभी. We haven't seen that consistency yet. He always has one incredible innings in the IPL, but he doesn't back that up. Hopefully, this is the season. He's more mature now. He is captain as well. What, he's 27, 28. He's seen much more now of cricket, and hopefully he can step up. If he can score like 600-700 runs, that will really help Rajasthan, because you can't always bank on Josh Butler. Of course, Yeah. Josh Butler आपको जिता सकता है मैच, मगर I think the form that he showed last year, it's very difficult to replicate that. And he was one of the main reasons from the But I batting mean, side. if you're looking at his cricketing right now, he's in good form. Like Josh Butler is smashing 60 to 70 every match consistently. Yeah, no, like, I mean, no doubt, that guy, for me, he's the number one T20 player in the world in terms of Mm. batting. But, like, again, you need these guys to step up. You need Jaiswal to step up, Padikkal to step up. Padikkal middle Padikkal, yeah. order players, Padikkal he is didn't someone that impress I me was as really, much. He didn't in the impress me beginning. in the middle order. Yeah. But for me, when he was in RCB, he impressed me a lot. Yeah, I used to like he was proper batsman. Like I like the way he has decision making in him, his batting stance, and इसका short selection अच्छा है. But I think, like you mentioned, उन्हें middle order में नहीं समझ में आ रहा. मसला यही है कि आपके ओपनर्स तो सेट है यशस्वी और बटलर में, तो इन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलेंगा. होपफुली ही इज वर्कड ऑन हिज गेम, ही इज लर्नड हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक, फाइंड द गैप्स, फाइंड द बाउंड्रीज व्हेन द फील्ड इज स्प्रेड आउट, व्हेन द बॉल इज अ बिट ओल्डर अगेंस्ट द स्पिनर्स. इफ ही इज वर्कड ऑन Mm. दैट साइड ऑफ द गेम, आई थिंक ही कैन बी एन इंपॉर्टेंट cog in this team. Now, Rayan Parag Faiz, this guy is always Yeah. talked about because Domestic. जैसे कि भाई इन्हें कुछ भी राजस्थान में खेलता, बैटिंग बॉलिंग करता, मगर कोई इफेक्ट नहीं रहता. एक गेम जिताता शायद एंड कुछ. But if you've seen in his domestic season last year, he's done Yeah. pretty well. He's shown consistency, and there is something there in this guy why he's playing every year. उन्हें 4-5 साल से तो खेल रहा राजस्थान में, उसको नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल. and hopefully उन्हें निकल के आए. That's another thing that they will be looking forward to. Hopefully he can do something. From all-rounders, Joe Ferreira is a great domestic player. Yeah. He But had a I very don't good know. SC20. Yeah, but I don't know if he's going to get a game. Holder, a lot will rely on him with the ball and bat as well. I think if you look at it bowling wise, the Trent Bolt and the two spinners, they're going to rely on them. And batting wise, it's the top order. Middle order, again, Hetmeyer का कैसा फॉर्म रहता है, होल्डर का कैसा फॉर्म रहता. If Hetmeyer doesn't perform, will they play Root? How will he play? Ryan Parag कैसा करता फिनिश? तो ये थोड़े सवाल आएंगे. मगर अगर टॉप ऑर्डर चल रही, इन लोग गेम जीत सकते हैं. We've seen in the IPL that sometimes top order is enough. Sunrisers में खुद देख लो, वार्नर और विलियमसन कितने गेम जीता है या बेयरस्टो जीता है. तो लाइक अगर वैसा चल रहे तो आप चल सकते हैं, वैसा नहीं है. बट अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रही तो ये टीम को दिक्कत आ सकती है. Yeah, I mean, मैं जब initially paper पे देखा ये टीम को, I thought अरे भाई इनला contention में रह सकते हैं. Like if they had the full squad, now that you mentioned Obed McCoy and Prasidh Krishna not being there, that's a very big. Obviously Prasidh Krishna तो था ही नहीं बहुत टाइम से. But अगर उनला आ गए तो भाई ये टीम वाकई बहुत solid है. Like they are balanced enough to get a decent score every game. They have depth in batting. They have their all-rounders. All of the all-rounders can bat. Even if I take Hetmeyer as an all-rounder, Hetmeyer can bowl as well, right? So Not भाई really. काफी bad.
He hasn't bowled. I think he's bowled one or two overs, if I'm not wrong. Like if Maybe it's Hetmyer, he's not really like the Holder is your all rounder. yeah, Holder is one Holder who's is gonna the give Donovan you. Ferreira. Yeah, Donovan Ferreira. There, Ashwin also you can call him an all rounder, right? Ashwin is Yeah, also an all rounder only. Ashwin बोल सकते So हैं आप. they And bat फिर they bat this pretty Kuldeep deep. Yadav Yeah. is not our नॉट Kuldeep या Yadav, या our friend. वो Yeah, तो मैं it's समझ गया, और डीआईपी बोल तो केएफसी का डिप याद आता है मेरे को, yeah. कुल डिप है तो वो जीरोक्स कॉपी है कुलदीप यादव की. Hmm. But yeah, I think you're right. Now that you mentioned those two injuries, it is looking a bit tricky. But yeah, Rajasthan का यही है, finished second last year as well, right? They were phenomenal. कभी भी like you can't underestimate this team, because somehow or the other they'll just make some way, unless they have a very poor season ahead. But at home they're still dangerous, right? घर के बाद में तो like they call Rajasthan Yeah, the fortress. and it will suit them. The ground dimensions, the pitch, it will suit their bowlers. I think someone like a Holder will get some movement. Hmm. Trent Bolt will get the ball under bahir. So I think that their ground will definitely help. भाई वर्ल्ड कप में अहमदाबाद आऊंगे जरूर भाई. आप बुला रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे. कोशिश तो करेंगे 100%. आए नहीं आए तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, मगर कोशिश तो करेंगे. जायसवाल, बटलर, Padikkal, Samson, Hepmer, Holder, Ryan Parag, Ashwin, Board, Saini Chahal. I would probably go for Kuldeep Sen, I think, there as well. I would add him, maybe take one. I think, Punter, you might be missing an extra. Oh, no, you have Holder there. So maybe I would play Kuldeep Sen instead of Saini. That's what I would do. And you're saying your Butler, Hetmeyer, Holder, Bolt are your four foreigners. I probably agree with that. Yes, But the only sad Faiz. thing is like looking at Zampa on the bench, man. Like that's like heart या मैन, मेरे wrenching, को right? भी Like, समझ में नहीं आ रहा भाई उसको कैसा खिलाएंगे. अब देखो, अगर प्रसिद्ध कृष्णा फिट था, देन यू कुड हैव गॉन प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन, ट्रेंट बोल्ट एंड एडम जंपा एंड होल्डर को बिठा सकते थे, या आप होल्डर को खिला के बोल्ट को शायद बिठा सकते थे, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस. बट ये भी नहीं कर hmm. सकते अब. लाइक स्टिल आई थिंक दे विल थिंक, इफ यू गोइंग टू चेन्नई, आई थिंक फैज एडम जंपा uh, विल प्ले. but in who is gonna play in the Chinnaswamy? Chahal or Zampa? Chahal, obviously, because No, Chahal will have Chahal most will play wickets. in the Chinnaswamy, and Chahal will do well. He understands the back of the hand. Again, Chahal also has to prove a point, because Fez right now, Kuldeep Yadav is bowling better than him, and he looks Hmm. like the bowler who will play in the World Cup, who's starting as of now. If you pick the team, you would Yeah. go probably Kuldeep over Chahal. They both will probably not play the way India is setting up. They're going to go with the orthodox spinner and a leg spinner, to one each. They're not going to go with both Kuldeep and Chahal, at least at the starting. So Hmm. this IPL, I know everyone says we don't cross formats, we shouldn't look at IPL. I also agree with that, but it happens. Unfortunately, IPL performances are noticed, and that's Hmm. where if UC Chahal can get the purple cap, or if he can be in Rajasthan's leading wicket taker, it'll leave him in good stead. I think he'll still make the India squad, but to for a place for 11, a good IPL will always help. Why not? 100% agree. विराट भाई सेल्फ भाई कुछ भी कर लो, इस बार तो जीतेगी हमारी हमारी क्या. कौन है आई भाई थिंक आपकी? आई थिंक उन्होंने गुजरात क्या गुजरात क्या जायंट्स ही थे ना. आप बोलो कौन है आपकी. RCB. अरे रे 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 आरसीबी है आपकी. अरे रे रे, कल कल का शो मिस कर दिया विराट भाई आप. कल हम इतनी विराट भाई की बात करें, आप नहीं आए, इतनी बार आपको याद करें. बट या Yeah, आरसीबी, मेरे ख्याल में तो आई डोंट थिंक आरसीबी जीतेगी. मतलब आप बिल्कुल आपकी टीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपके खिलाफ या कुछ, बट आई जस्ट फील कि आरसीबी की जो स्क्वाड है अभी, थोड़ी बहुत इधर उधर थोड़े उधर पे प्रॉब्लम्स हैं जो कल डिस्कस करते थे. तो आई थिंक आरसीबी आरसीबी केकेआर विल विन. दोनों मेरे को थोड़ा वीक लग रहे हैं, इन पर्टिकुलर केकेआर, मगर उसके बाद बात करेंगे हम लोग. फैज, इज देयर सम स्टैट्स दैट वी कैन लुक एट फॉर राजस्थान? Definitely, as for a few stats we can look at, sir. Kuldeep Yadav's ball to Alex Carey. Yes, Punter, that was incredible, man. Oh man, that Oh, was that's one of it. क्या बॉल था भाई. Absolute Jaffa, मैं mate. याद है पूरे गुस्से में थे हमला, एंड देन आई वाज लाइक अरे मुस्ताफ बॉल याद है, नेक्स्ट लेवल ब्रो. Sanju Samson, bro, highest run scorer. Best individual bowling. अनिल कुंबले नहीं हो सकता भाई फिर से. अरे यार वो ये मिस कर दिया मैं, सॉरी. अनिल कुंबले कहाँ गया. that's अनिल that's my कुंबले bad. नहीं हो सकता. No worries. Highest individual score, Josh Butler 124 or 64. I think that was against Sunrisers. Yes, it was against Sunrisers. Lowest total 58 against RCB. Highest wicket taker, Trivedi. This guy annoyed the crap out of me, bro. And that's it. Those kind of bowlers like Holder as well, who can Hmm. change the pace and everything, they will be very, very useful in Jaipur. You saw Siddharth Trivedi, like वहाँ पे मच्छरा उड़ रहे इधर उधर जयपुर में, उन्हें कटरा डालता था, उसको खेलना impossible हो गया था. He was bowling like Glenn McGrath, bro, in that first season. I still remember that very clearly. So I'm not surprised with those 65 wickets, and highest team total 226 against Punjab, Sharjah. That was, I think, that game, bro. The Tewatia, Too much, yeah. 5 sixes. So
Yeah, look, Rajasthan. First season I didn't think that they would win. They performed. They punched above their weight, if you may say so. Mm. Snodker, Graham Smith, Shane Warne, Jadeja, all these guys, they punched above their weight. But and then after that, they had one or two playoff, opportunities. But apart, and last time they made the finals, so they've been. I haven't been that consistent, but I think they are building a team. They do have some star power there. A lot will lie on Sanju Samson, I think, because if Sanju Samson Faz is the leading Mm. scorer, if he's the orange cap holder, this guy will make the one day World Cup squad. That's just a opinion that I have. Yeah, Prediction. I'm sorry. I was just going through the stats, and the best figure is Mustafa's favorite bowler in the IPL, Mr. Sohail Tanvir, भाई six तो wickets. कौन Yeah, favorite bowler? He's the best bowler in the IPL. yeah, He's not my six. favorite. He's the best bowler. He's the Yeah, yeah, I remember his first spell. याद है यार मेरे को, like it was yesterday, man. Six wickets, 14 runs. याद है मुस्तफा? परेशान हो गए थे. Nobody understood how to bat this guy when he came. किसके खिलाफ था वो? उसके मेरे को क्या याद नहीं बोलते हैं हो गया अपना मेरे को यार सोच सी के एस के लिस्ट सी एस के सी एस के सी एस नहीं के यार वो सीएसके नहीं था पक्का ऑपोजिट सुपर किंग्स या अच्छा तो जय mic testing 1 2 3 mic testing 1 2 3 can you guys hear me or Fez mic testing 1 2 3 Fazullah hello who can you hear अगर आवाज आ रही है तो सॉरी बोल दिए आई थिंक हम लोग के थोड़ी बहुत इंटरनेट इश्यूज हो गए थे तो इसकी वजह से मुस्तफा भाई और मैं दोनों चले गए थे एकदम से बट लेट मी नो अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है यस और नो अभी के लिए वी जस्ट वेट फॉर मुस्तफा भाई बट लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट सुहेल तनवीर का स्पेल हमको सबको याद है कि ही टुक आईपीएल बाय अ स्टॉर्म 6 विकेट्स 14 रन्स लेके चले गया था उन्हें एंड या जस्ट लेफ्ट एवरीवन शॉक्ड बाय देयर गट हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर तो कोई डाउट नहीं है जॉर्ज बटलर लास्ट ईयर जो फोड़े थे सनराइजर्स को आई एम प्रीटी श्योर सबको याद है वो इनक्रेडिबल बैट्समैन अभी के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन फॉर इंग्लैंड एज वेल इंग्लैंड के लिए भी कंसिस्टेंटली जैसे मैं बोल रहा था आपको कि जितने भी टूर्नामेंट्स खेले अभी इन द वाइट बॉल सर्किट ही वाज अमेजिंग इन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ही वाज अमेजिंग अगेंस्ट बांग्लादेश जस्ट आफ्टर द क्या बोलते हैं T20 वर्ल्ड कप भी एक सीरीज था उसमें भी आई डोंट थिंक ही हिट अ लॉट ऑफ रन्स बट ही मैनेज्ड टू स्कोर या पंटर भाई यू आर राइट 4 ओवर 16 14 runs and 6 wickets next level था यार उन्हें
केजीएफ विराट तो है भैया, मैं ये नहीं मना करा। विराट भाई आप ये देखो 2016 में 930 रन या कुछ मारे थे विराट भाई केजीएफ अपने मेरे को तो विराट भाई के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है यार मेरे दिल में। नो डाउट कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ही इज द गोट, जो भी आप बोले, लेकिन उन 900 रन मारने के बावजूद भी आपके बॉयज फाइनल में आके हार गए। तो आप ये देखो कि भाई विराट कोहली को, अगर विराट कोहली आउट हो गया हर मैच में तो विराट कोहली नहीं कर सकता, राइट? अगर विराट कोहली नहीं करा तो और कौन है वहां पे करने के लिए? तो वैसे हिसाब से सोच रहा हूँ मैं कि विराट कोहली, थोड़े ही लोग हैं वहां पे जिस पे डिपेंडेंसी है, अपने आरसीबी की, एंड दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज लूजिंग, दे डोंट हैव पीपल हु कैन फिनिश इट। ग्लेन मैक्सवेल भी अगर बीच में इंजर हो गए तो वहां पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कल बातें डिस्कस हुई थी कि आरसीबी के जो प्रॉब्लम्स है, फ्लॉज है, अब फिनाले नए हैं आईपीएल में, फाफ डुप्लेसिस एक्सपीरियंस है, बट एक वो हिटर, एक जो आके पूरा अपना गेम हाथ में लेके गेम चेंज कर दे, वो आई डोंट थिंक आरसीबी में है। यस, ऑन ऑन हिज डे विराट कोहली कैन डू एनीथिंग, बट मेरे हिसाब से अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है। यस, वी वर स्टक, बट आई होपफुली अभी तेरा बाय आ रहा है। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन विराट भाई। तो मुस्तफा भाई भी आ गया हमारे साथ। भाईजान क्या आवाज आ रही? मैं अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट। कहाँ जा रहे? फैज स्टॉक मिस्टर इंडिया भाई आ रहे हैं। कौन भाई? भाई मिसिंग एबी डिविलियर्स। यस, आप लोग कमेंट्स भेजते रहिए फॉर राजस्थान रॉयल्स। दे वर फर्स्ट टाइम विनर्स, दे वर फाइनलिस्ट लास्ट टाइम। आई थिंक इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी लास्ट टाइम टू win the IPL, but they were up against exuberant Gujarat Titans who were playing for the first ever season, and they were playing in their home ground. तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए, but the way they played last year, it was Butler at the top, but also their bowling, like we mentioned, they bowled like a unit. Like all five of their bowlers were difficult to get away, and it was a very good performance, a very good season. To replicate that, I think it will be more difficult now because of the players that they're going to miss, and also they need consistency from their main players. If Sanju Samson can provide me a 600, 700 run season, I think that will make a world of difference. Yes, Faz. I cannot hear you, sir. The mandem ain't ready. The mandem can't hear you. I think you're on mute, prof. आ गई आवाज? हाँ, आ मौत गई। को छू के आ गया मैं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि संजू सैमसन का प्रॉब्लम ये है, 250 350 मार लेता उन्हें थ्रू आउट द सीजन, एंड देन ही जस्ट गोस कोल्ड, राइट? You see him getting bold, you see him not being able to sustain his wicket. वो पीटर ने put a price on his wicket, वो भी एक प्रॉब्लम दिखता है मेरे को। ने जाके Yes, sir. मारने, he tries to become a hitter at times, he tries to, फिर जब उसको लगता है कि हाँ भाई मेरा फॉर्म नहीं चल रहा, फिर एकदम जिम्मेदारी ले लेता उन्हें, और फिर हाँ चलो ठीक है अब मैं मारूंगा, लाइक अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। So you play as a professional cricketer, and when I say professional cricketer, make sure that you put a price on your wicket, के भाई आपकी विकेट कीमती है, अगर आप चले गए तो पोटेंशियली रुकने वाला नहीं है कोई, और एंड तक खेलने वाला कोई नहीं है। संजू सैमसन ऐसा प्लेयर है जो शुरू में भी अगर आए तो वो एंड तक रुक सकता है, विदाउट अ डाउट। तो संजू सैमसन डेफिनेटली इज वन टू लुक आउट फॉर दिस सीजन, बिकॉज उसकी जिस तरीके से इंडिया की टीम के लिए वो फाइट कर रहे हैं, उनको मौका मिला फिर इंजर हो गए, तो आई थिंक वो प्रूव करने के लिए ही विल डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड सीजन दिस टाइम अराउंड। Yeah, 100%. And like, talent तो बंदे में बहुत है, टाइमिंग उसकी बहुत अच्छी है. He picks the ball pretty well as well. Ability to clear the boundary. He looks like छोटू सा बच्चा, but he can really clear the boundary with ease. So उसका six hitting ability is quite underrated. Yes, he can find the gaps around the ground, but उन्हें जो clearing the ropes, Sanju Samson can do that, and that's a lot to do with his timing. He is naturally gifted, Sanju Samson. Just about that consistency, like you said, I think sometimes when you have that much talent, like Rohit Sharma as well, थोड़ा concentration off हो जाता है. Sometimes you don't know what to do, और आप विकेट फेंक देते, आप वैल्यू नहीं करते अपने विकेट को, एंड दैट्स समथिंग नाउ होपफुली ही इज मैच्योर एंड ही कैन चेंज दैट, संजू सैमसन. आप सो जो दैट विल बोल रहे बी थे, अ मैं वेरी नेक्स्ट बंदे का वही नाम लेने वाला था कि जब आपको इतना टैलेंट रहता कि आप कंफ्यूज जाते, और भाई जो विराट राणा है उन्होंने सही नाम लिया। सूर्या कुमार यादव के बारे में अगर बात करें अपन, ही हैज हर शॉट डिक्शनरी में उनके पास, क्रिकेट की डिक्शनरी, कोई और डिक्शनरी मत उठाओ, बट अगर आप सूर्या कुमार यादव का देखें, ही इज मिस्टर 360, हर ग्राउंड में कोई भी शॉट मार सकते हो, बट वो भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं फ्रंट में आके खेलूँ, मैं बैक में आके खेलूँ, मैं कट शॉट खेलूँ। तो वो हिसाब से आई थिंक जब टैलेंट हो ज्यादा होता है, मुस्तफा भाई सेम बोले कि आपको लगता है कि आप कहीं भी कुछ भी खेल ले सकते, कभी कभी आप अटेंशन नहीं दे पाते, एंड उस चक्कर में आप पड़ जाते। सूर्य कुमार का 000 के बारे में अगर मैं सही बोलूं, आई थिंक यू शुड जस्ट गिव हिम अ बिट मोर चांसेस, एक 2 और 3 चांस देख के देना चाहिए उनको। आई वुड आइडियली वांट टू शाउट एट हिम, बट आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, दैट ही acclimatized to one kind of a format, T20, right? And I think just give him some time to play in the big leagues in the 50 overs and get himself, आप मिट्टी में अगर थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको,
रहे तो आपको एक आदत हो जाती है वो मिट्टी की, तो आई थिंक वही है कि सूर्या कुमार को थोड़ा और 1-2 ओडीआई से ज़्यादा नहीं देना चाहिए अब। द प्रॉब्लम इज बैकलैश बहुत ज्यादा रहेंगे और आपके पास टाइम कम है, तो अब उसको इतना आप बैक करेंगे, कितना बैक करेंगे? अगर आप उसको बैक और 2 मैच करेंगे, 4 मैच के बाद तो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा, अगर आप ओडीआईस देखें तो, बिकॉज वनडे वर्ल्ड कप इज, यू डोंट हैव दैट मेनी वन डेज अंटिल द वर्ल्ड कप। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फैसला रहेगा। अगर श्रेयस अय्यर फिट है तो शायद उसको ही मिल जाएगा जगह, अगर नहीं है फिट तो यही सवाल है कि आप सूर्य कुमार को लेंगे या संजू सैमसन को लेंगे, यही सवाल सब लेंगे। और सूर्य कुमार अगर परफॉर्म नहीं करा, सब छीड़ के रख देंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं देख लिया एक चीज, वेदर इट्स इंडिया मीडिया, इंडियन फैंस और एनीबडी, दे आर नॉट दैट टॉलरेंट। लाइक केएल राहुल पे देखो कैसा चढ़ गया, सब सेम थिंग विल हैपन विद सूर्या कुमार यादव। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। आई डोंट नो व्हाट द करेक्ट आंसर इज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट जो भी है देख समझ के करना पड़ेगा फैसला, जो भी लिया। सूर्य कुमार यादव का यही है भाई कि देखो, अगर अपन सूर्य कुमार को हटा भी दिए, उसके रिप्लेसमेंट पे में जो भी बंदे आएंगे वो मोस्टली इंजरी हो सकती है उन लोगों को भी। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपको अक्टूबर या सितंबर तक रुकना पड़ेगा कि भाई किसके हड्डी में दर्द नहीं हो रहा, उसको वो ही जाएगा। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बीइंग फिट। इफ इवन इफ सूर्य कुमार स्टेज फिट एंड संजू सैमसन, बाकी के जितने भी बच्चे कंटेंशन में हैं, कॉन्टेस्ट में हैं अगेंस्ट सूर्य कुमार, अगर वो लोग इंजर हो गए तो खत्म, सूर्य कुमार इज इन द वर्ल्ड कप। बिल्कुल। Fez, your highest scorer and highest wicket taker for Rajasthan in 2023. Your prediction, sir? हाईएस्ट स्कोरर एंड हाईएस्ट विकेट टेकर बोले ना आप? Yes. Okay, I'm just going to go back to the team. मेरे हिसाब से highest scorer, I'm going to go with yeah, Josh Butler. I don't see him losing his form and rhythm. He's a phenomenal batsman. और मैं अभी वही बोला था जब आप break के unfortunate incident जो हो गया था with the Hmm. electricity, but I was saying कि भाई Josh Butler has been in good form, and he still is continuing to show those signs. He showed it against Bangladesh also. He got a quick 60s and 70s. South Africa में भी smashed it in all the innings. So he's in good rhythm. So I feel कि अभी भी जॉर्ज बटलर रहेगा। बॉलर के डिपार्टमेंट में आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी फनी नेम दैट आई एम गोना टेक, बट आई फील दिस गाय इज one of the best bowlers in the IPL, and that's Yuzvendra Chahal. Chahal is going to be the top wicket taker. Hmm. Merely, I'm going to go with Yashasvi Jaiswal at the top. Someone I think he can score. He's a very talented guy, and hopefully he can break through in this IPL. So I'm going to go with him as my leading scorer for Rajasthan Royals. Sanju Samson, I was really thinking about him, but I think Sanju will win matches for Rajasthan. But overall scorer, I'm going to go with a differential pick in Yashasvi. With the ball, it's a bit more tricky, but if I want to be a bit safer with the ball, I would go Trent Bolt. I think Trent Bolt in the power play is always lethal. He's always someone who can pick up wickets with that new ball. With the older ball also in the IPL, he's done some good bowling in the depth, whether it's from Mumbai or Rajasthan. So Rajasthan, Trent yeah. Bolt will be my leading wicket taker for Rajasthan Royals. Where do you think Rajasthan will finish in the points table this season? I think they're gonna finish in the top four. I feel, I don't know why. You think they're going to finish in the top four? Okay. I'm going to go with. It's a tough call, but I'm going to. What did I say with RCB 7? So Rajasthan, I'm going to go 6. I think they're going to come sixth. I think they'll just be outside the top four. Like I said, I think the other teams have strengthened, and it will be a bit more difficult for Rajasthan to replicate last year's performance, especially also with their own problems, with their own injuries. Thoda sa mushkil रहेगा. But it's an exciting team. I don't mind if they do well. Rajasthan is a type of team I don't like facing them because I think they always do well against Sunrisers. But yeah, they can be an exciting team to watch. When Butler is on form, there's no player like that. Sanju Samson, when he's on form, there's no player like that. So it's an Exactly. exciting team. And there's some youngsters there like Jaiswal and Patikal that you mentioned. Agar they can have a good season, that will be very good for India's future also. So I think उस हिसाब से it's a good team, exciting. I wouldn't be surprised if they make it to the top four, but I feel ये साल नहीं बनेगा उन लोगों का playoff. देखना पड़ेगा आई थिंक, बट या लॉट ऑफ एक्साइटिंग देखना तो प्रॉस्पेक्ट्स। पड़ेगा भाई, देखना यस। तो पड़ेगा। कुछ भी हम बोल लेते हैं, मगर आधी चीज़ें तो गलत बोलता हूँ मैं, तो प्रिडिक्शन तो ऐसी होता है, इसलिए हम लोग मैं नहीं घुसता हूँ गैम्बलिंग में, बिकॉज आई थिंक आई वुड बी ब्रोक। बट यस, yeah, from Rajasthan's point of view, for them it's about how are you going to replace Prasidh Krishna's overs, how are you going to replace Obed Mukoi's overs, and do you have the firepower in the middle order to take you to a 200, 220, 230 score? That will be
reliant on Hetmeyer. I think he has to take that responsibility. Along with him, Ryan Parag also has to now take his game to another level. He's shown that in domestic cricket, but now in the IPL, he Hmm. needs to show more consistency. Can he finish off games for Rajasthan? Can he help them cross the line? If it's 12 runs and over, can Ryan Parag come and finish a game? So Yeah. these are the things that I want to look at. I have no issues with the top order. I also have no issues with the spin bowlers. You can say that Ashwin and Chahal are getting older, but old is gold these days, and experience will always help. And you always have Adam Zampa, and you can squeeze him in some way or the other if required. Yeah, I think they have a lot. And if you, like you said, Obed McCoy comes back from injury, and who was the other guy you mentioned who was injured? Prasidh Krishna. प्रसिद्ध कृष्णा तो थोड़ा मुश्किल ही है, आई डोंट नो, तूने तो कहाँ गायब ही छे, बट या if Obed McCoy at least gets in, Navdeep Saini is all right, decent bowler here. You have Kuldeep like Sen you said, is he's going to have a good IPL, I think. उन्हें अच्छा है भाई, अच्छा bowler है Kuldeep Sen. तो I think he है will have a काफी good. प्रोस्पेक्ट्स है जो अभी खिल निखर के नहीं आए, तो आई थिंक निखर गए तो फिर इट बी वेरी गुड फॉर राजस्थान एट द राइट टाइम. बट या लाइक आई सेड, आई मीन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बट आई फील लाइक जॉस बटलर है यार, होशियार है, उन्हें कुछ तो नहीं करता. हाँ जी, नहीं बिल्कुल है. देखो, ऑल्सो कैप्टनसी वाइज संजू सैमसन, आई थिंक ही इज इम्प्रूव्ड. उसका बहुत सवाल थे उसके ऊपर, एंड देवर सिंह इसको क्यों बनाए कैप्टन एंड ऑल दैट, बट आई थिंक द फैक्ट दैट ही टुक हिज टीम टू द फाइनल, यू सी दैट ही हैड अ रियली गुड टीम एंड बटलर टुक हिम देयर, बट स्टिल यू हैव टू हैंडल द लाइक्स ऑफ जस्ट बटलर, अश्विन, चहल. उन्हें रोहित शर्मा ने क्या बोला था परसों, अश्विन हर दो ओवर में आके बॉल पूछता, तो यू हैव टू कंट्रोल दिस पर्सनैलिटीज ऑल्सो. इट्स नॉट ईजी. दैट्स अ टास्क फॉर अ कैप्टन, एंड आई थिंक संजू सैमसन has become mature, and he's hopefully he can continue to captain well, and with the same thing, consistency in his form. अगर ये दो चीजें दिख के आए तो then Rajasthan can have a good season. Otherwise मेरे को थोड़ा मुश्किल दिख रहा है. 2011 की टीम और 2023 टीम, बहुत फर्क है इंडिया की टीम में. फर्क ऑफ तो कोर्स बहुत है भाई. कोई प्लेयर ही नहीं है 2011 का अभी. कौन? खाली विराट कोहली है शायद. कोहली, और That's कोहली के it. वेट में भी बहुत फर्क है कोहली Yeah, के. there's जमीन आसमान का फर्क है. मगर अगर आप बोल रहे हो 2011 की तगड़ी टीम है, वो टीम भी हारी थी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट. अगर आप याद है, उन लोग 260 फॉर 1 या 2 थे, एंड एकदम से 290 ऑल आउट हो गए थे, एंड दे लॉस्ट दैट गेम. इंग्लैंड के अगेंस्ट ड्रॉ कर दिए थे. क्वार्टर फाइनल में फंस गया था, युवराज निकाला था. पाकिस्तान के अगेंस्ट सचिन 4 बार आउट हुआ. श्रीलंका के अगेंस्ट जल्दी विकेट चले गए थे, फिर गंभीर आके संभाला along with कोहली एंड देन विद धोनी. तो इवन दैट वाज नॉट अ स्मूथ वर्ल्ड कप विन. आके सबको नीट हो गए थे इंडिया वो उसमें भी. तो यहाँ पे भी चैलेंजेस रहेंगे, बट दे डू हैव, इफ यू कंपेयर द अदर कंपटीशन दैट दे हैव, दे कैन compete इंडिया, बट धक्के तो खाएंगे. इट वोंट बी दैट स्मूथ. आई एग्री, इट माइट बी इवन मोर डिफिकल्ट देन 2011. उतना तो मैं सहमत हूँ. 100%, yeah. Considering the form and the injuries and everything, yeah, it's a much more tougher year like that. Yeah. Fez, any last thoughts, with Rajasthan Royals? Anything that you want to plug in? Anything you want to discuss before we wrap? I mean, I just feel like Rajasthan, why I'm backing Rajasthan to do well is just certain names that are like looking ke bhai maybe इन्हें कुछ कर जाएगा ये साल. Like Samson तो है because he's fighting for that India spot. Josh Butler, Rayan Parag, domestic circuit में he wants, but Padikkal not that great, but he is also a prospect for India. He has played for India as well, right? And then like Donovan Ferreira, hey, we've seen him do well in the SAT20. Holder, an experienced sunriser in it. Yeah. Ashwin, that spin, when you look at the spinning combinations that they have, yeah, I know India में थोड़े बहुत wickets उतने spinner friendly नहीं रहते in certain parts, but भाई ये लगा चल गया तो बहुत मौत है यार ये spinner ना Yeah, पूरे. especially होम कंडीशंस में. अवे कंडीशंस भी आप सही बोल रहे हैं कि वहां पे भी टर्न होता है, ऐसा नहीं कि नहीं टर्न होता. एंड एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस, अगर इन लोग प्ले ऑफ पहुंच गए तो और विकेट थोड़ा वेर एंड टेयर देखेंगे, एंड दे कैन एक्सप्लॉइट इट 100%. दैट्स अ गुड Yeah, so शाउट. मेरे हिसाब से that's the only way I feel कि भाई राजस्थान थोड़ी बहुत scary दिख रही. हेटमायर ऑल्सो हैज टू स्टेप अप. बहुत जरूरी है भाई हेटमायर को कुछ करना, लाइक कंसिस्टेंसी थोड़ा दिखाना. आई थिंक दे विल रिलाई ऑन हिम, एंड ही हैज सम गुड आईपीएल innings as well. ऐसा नहीं है कि नहीं है. But yeah, that pretty much wraps it up. Tomorrow, Fez, again we're going to do another team hopefully, and we'll preview the final. And yeah, ये तो सिलसिला चलते रहेगा. We'll also have shorts coming up on our YouTube channel, Instagram and Twitter, so watch out for that space, and you can give your comments. And hopefully we'll also do some nice debatable topics where we will be ranking things going into the IPL phase, right? तो अपने जो viewers हैं उन लोग भी आके comment कर सकते हैं, उसमें अपने rankings भी दे सकते हैं. That should be a good fun leading up. We only have a week to go, bro. It's 1 week from today, or like actually 6 days now for us. So yeah, we're getting closer and closer to the IPL, the Indian Carnival. So आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ रोज
एंड हम लोग होपफुली कंटेंट भी इंक्रीज करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स भी छेड़ेंगे, और आपके भी सवाल लेंगे, कमेंट्स लेंगे, जो भी है आप सोशल मीडिया पे भी हमको टैग करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फैज, एनीथिंग एल्स? Yeah, just quick word out. Just wanted to get your opinion. Who do you think is winning tomorrow, Sri Lanka or New Zealand? First today. I think New Zealand have the upper hand. Against Sri Lanka, they do have some good players. I think Shanaka will be back, if I'm not mistaken. Mm, Hasaranga is yeah. also there. There are players there, but in New Zealand conditions, I always back New Zealand. And yeah, it should be a good game. From the test series, we saw also Sri Lanka had good opportunities over there. So it might not be an easy series for New Zealand, but I will back them in these conditions to beat Sri Lanka. Pakistan का कुछ update है? पाकिस्तान का 3 विकेट चले गए थे अफगानिस्तान के लास्ट आई चेक्ड नाउ इट्स ओए होए. 51 for 4 42 required in 58 balls so Yeah, Pakistan is not giving up right it now. could be close. It could be close. तो Hmm. उसमें आई थिंक एहसान अल्लाह 2 विकेट ले लिया. He's had a good PSL as well. So yeah, Faz, I think New Zealand will win tomorrow, and the WPL final, I think, will be a close one. Hopefully, we'll Hmm. discuss a bit tomorrow, and we'll discuss our next team tomorrow as well. Thank you so much for joining me. It was a good episode. I enjoyed it. Thank you for the stats and the graphics that helped in coordinating our topics and of discussion and just guiding the show. So good job on that. I will catch you tomorrow. Get some rest. Let's get some research in as well, and we'll try to get as much as content out as possible for the IPL, man. That's our job, and hopefully you guys can keep joining us. Take care, guys. In the comments over join, we really appreciate it. Virat bhai, everybody, Punter, Chirag bhai, Anshul bhai, as usual, our regulars. Thank you. And kal bhi hamare saath judiye. Hopefully we will see you tomorrow. Take care, friends. Have a good evening, sir. Good night sir.